हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल्स वाइजर। जो हम आज सेशन कर रहे हैं, दिस सेशन इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज इन प्रीलिम प्रिपरेशन। क्योंकि बेसिकली डाउट रहता है हमेशा कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या है और पीवाईक्यू को एनालाइज कैसे करना है। बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स आस्किंग द डाउट्स कि सर पीवाईक्यू का एनालिसिस करते कैसे हैं, एंड देयर आर मेनी मिस्टेक्स दैट पीपल डू while analyzing PYQs. Some are using PYQs just for the sake of knowledge and missing the important part to analyze how the examiner is setting options, what is the language of the paper, and how to find traps in the examination. In this session, we are going to discuss about the analysis of PYQ, what is the importance of PYQ, and what mistakes you should avoid in that. The most crucial part of prelims is the preparation, is the PYQs. But the question arises कि ये importance क्यों है? पहला is important thing is this कि this PYQs is like a Bible. It gives you a direction कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. It is important that the themes are often repeated in the exam, but more than that, when you start analyzing PYQs, you yourself start framing questions while reading your content. जब आप कोई basic books पढ़ते हैं, कोई भी current affair की magazine पढ़ते हैं, when you read newspapers, then you start aligning all these sources into the direction of exam. क्योंकि वो sources exam के लिए नहीं बने हैं. For example, newspapers are not drafted in the way कि UPSC क्वेश्चन पूछेगा. But you have to read newspapers in that way. You get the hack of कि examiner options set कैसे करता है. And this is very important part. So, to get a direction, what to study and how to study, to get the important themes, because sources बहुत ज्यादा हैं. Everything under the sun can be asked in the exam. But फिर भी there are some important themes that are often repeated. Or when you start analyzing PYQs, you understand कि questions बन से कैसे हैं. For example, if in the in your source of environment or say polity or say economy, if there are some common understanding things, for example the philosophy of an organization environment part, if you start reading you will realize कि इसमें सब कुछ ही cover है. It means it is difficult for the examiner to mark these options wrong. If you get that hack after analyzing PYQs, it will help in easing your preparation, because the pressure of unlimited things to study sometimes becomes overwhelming. उसको avoid करने के लिए PYQs is the most crucial part of preparation. अब अगला पार्ट आता है कि how to analyze PYQs. जब एनालिसिस की बात होती है तो we have to study the PYQs not just for the sake of knowledge. Of course, knowledge is important part, but you have to see कि कौन सी themes important हैं. Let's take an example of a question. Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? It's a PYQ, I think, of 2017. If you see the options and see the question, then you will realize that the examiner is asking the fundamental rights. And in this topic, the examiner is asking about the classification of fundamental rights. और उसमें भी specific right against exploitation. मतलब अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखो तो फंडामेंटल राइट्स को क्लासिफाई किया गया है. राइट टू इक्वालिटी को आर्टिकल 14 to 18, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को आर्टिकल 23 and 24. इट मीन इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. और आपको समझ में आया कि फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये सब थीम इंपॉर्टेंट है. अगर 2025 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देन यू शुड नॉट रिपीट द मिस्टेक, बिकॉज the things that are in your basic books
if you are committing those questions wrong, it's a blunder. जो चीजें किसी को नहीं आती वो गलत सही होना कोई मायने नहीं रखता, because the cut off you have to clear the cut off. But if there is some things जो बेसिक बुक्स में हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए. इसमें you have to see that now if you see analyze the options, you will realize कि abolition of untouchability seems like it's under the exploitation part of the classification of fundamental rights. If you go and apply common sense, or you can mark your answer 1 to 4, but answer is 1 and 4 because if you go and study the right to equality, the classification constitution में है, right against exploitation का classification constitution में है. Now you see कि examiner option set कैसे करता है. तो reading should not be your passive reading. Reading should be aligned with the demand of the paper. हमें ये चीज ध्यान में रखनी है. For example, when student ask कि PYQ का analysis time ले रहा है sir, but you have to understand PYQ should be your Bible. अगर कोई आपको पूछे कि पॉलिटी के प्रियम्बल टॉपिक में से कितने टाइप के क्वेश्चंस आए गए हैं, कितनी बार रिपीट हुए हैं, दैट थिंग शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. आपको पता होना चाहिए. और ये एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है और ये मेंस के लिए भी है. बट नाउ इन दिस सेशन वी आर टॉकिंग प्राइमरली अबाउट प्रीलिम्स एग्जाम. तो हमें ये समझना है कि यू विल एक्चुअली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम इफ यू गो बाय द डायरेक्शन ऑफ PYQs. तैयारी करना और एग्जाम की तैयारी करने में फर्क है. और PYQ की ये जो एक्सरसाइज एनालिसिस की है ये बेनिफिट करती है कि आपकी एग्जाम की तैयारी हो, ना कि सिर्फ तैयारी हो. एंड दिस एक्सरसाइज विल बेनिफिट यू इन बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस. जब चीजें लगती हैं कि बहुत ज्यादा हैं, ओवरवेलमिंग हैं, कैसे कवर होंगी, पर वो सभी के लिए है. इट्स एग्जाम ऑफ कंपटीशन. इट्स एग्जाम दैट आपके किसी और से ज्यादा आने चाहिए. एंड PYQs विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन दिस. एंड it helps you to tackle the questions that seems tough at the first place. Because when you study one topic and understand कि वहां से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, you can extrapolate that knowledge in another topic. So the fear of unknown can be tackled if you try to analyze PYQs by reading between the lines. We will see in upcoming slides कि इनकी रीडिंग पैसिव रीडिंग नहीं होनी चाहिए. PYQ analysis should be a brainstorming session, should be done regularly. ये एग्जाम के पेपर से पहले 2-3 एक महीना पहले अच्छे से कर लिए, 2 महीने पहले अच्छे से कर लिए. You will not get into that habit. It should be a regular exercise. सभी बोला जाता है कि जब भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करो, syllabus and PYQs should be on your टेबल. ये चीजें आपके टेबल पे मस्ट होनी चाहिए. क्यों? इन चीजों की वजह से जो हम आप डिस्कस कर रहे हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस MCQs, यू मस्ट हैव सीन कि कई स्टूडेंट्स का प्री नहीं होता 5 बार 4 बार, पर जब प्री होता है तो मेन हो जाता है. इट मींस दे आर नॉट लैकिंग नॉलेज. ये तो नहीं हो सकता ना कि किसी ने एग्जाम 5th अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया और रैंक मेंस में 10th आ गई. तो इसका मतलब क्या था कि नॉलेज की कमी नहीं थी. देयर वाज अ लैक ऑफ एप्टीट्यूड. देयर आर इनफ नंबर ऑफ एम्पल नंबर ऑफ एग्जांपल्स. यू कैन फाइंड मेनी टॉपर्स जिनका प्री नहीं हुआ पर पहली बार ही प्री हुआ और मेंस हो गया. बिकॉज दैट एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू डेवलप एन एल्गोरिथम टू सॉल्व MCQs, and that exercise will help you in UPSC Prelims 2025. Now एक क्वेश्चन आता है कि जब हम एनालिसिस करते हैं कि उसमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए. आई हैव सीन स्टूडेंट्स PYQ उठाए, उसकी पैसिव रीडिंग की, क्वेश्चन था, उसका आंसर किया, काम खत्म. क्वेश्चन के रट्टे लगा लिए. बट यू शुड नॉट रीड PYQ as just a source of knowledge.
And mistake is not analyzing how the examiner is setting options, setting questions, creating confusion in the questions, and what are some areas जहां पे एग्जामिनर खेलता है. You must have heard कि भाई यूपीएससी में जो नंबर्स होते हैं, डाटा होता है, वो गलत होता है. It's a very superficial understanding. We will go try to understand in upcoming sessions कि वो क्यों होता है और कौन सा डाटा गलत होता है. You can't just blindly go and say all the data points are wrong in exam. ऐसे तो एग्जाम भी नहीं होगा. But you have to understand कि उसके पीछे लॉजिक क्या है. And not analyzing this PYQs by looking at the options and how the examiner is setting options, तो वो waste of your efforts and time होगा. And PYQs demand a certain kind of active brainstorming sessions. तो आपको खुद को अपने साथ लगाने हैं. तो PYQ से क्या होता है, एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सोर्स ऑफ नॉलेज शुड बी वेरी वेरी एग्जॉस्टिव. एक क्वेश्चन आया, उसका आंसर था, बाकी ऑप्शन तो आंसर नहीं है, बट वो ऑप्शन एग्जामिनर ने जो बनाए हैं, इट मींस दीज आर द पोटेंशियल एरियाज दैट कैन बी आस्क्ड. तो नॉलेज कैसे बढ़ानी है PYQ से, कि उसके क्वेश्चन को समझना, उसके ऑप्शंस को एक्सटेंसिव रीडिंग करनी. एंड यू हैव टू डू गूगल ऑप्शंस आल्सो, क्योंकि वो ऑप्शंस कई होते हैं कि जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स में भी नहीं होंगे. बिकॉज यू सी इफ द यूपीएससी द हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो बड़े स्टैंडर्ड बुक्स में भी नहीं है. बुद्धिज्म को लेके, जैनिज्म को लेके, आर्ट एंड कल्चर को लेके. तो यू हैव टू डू अ बेसिक गूगल रीडिंग. एंड गूगल इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स. अभी भी इंपॉर्टेंट है, पर प्रीलिम्स से 2 महीने पहले यू हैव टू स्टार्ट गूगल थिंग्स. This is a key part of preparation. And PYQ का analysis to understand what examiner is asking. वो कभी ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने ट्रेंड जो चेंज किया है आफ्टर 2021 2022, वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा अपकमिंग एग्जाम में. द लेवल ऑफ एग्जाम is increasing day by day. The more now the demand of the exam is not just to have rectification. You should have an analytical ability also. Try to extrapolate things, try to have a kind of a journal understanding to take a logical conclusions. वो बड़े important हो जाते हैं. And that to develop this MCQ aptitude and to develop algorithm कि मैं इस algorithm के basis पे अपना paper solve करूंगा. And that algorithm you will be able to develop when you analyze your PYQs. कोई कराने की exercise नहीं है कि कोई आपको कराएगा और करवा देगा. It should be, become a part of your personality. Algorithm naturally आएगा. Of course, you will put efforts into it, but that should become your habit. तभी जिसका एक बार प्रीलिम्स हो जाता है, उसको इतनी मुश्किल नहीं आती आगे के प्री निकालने की, because that person becomes habitual to the exam, the demand of the exam, to understand how the examiner is setting options. और जब हम आगे पढ़ेंगे, हमें यह भी देखना है, with the right knowledge and right aptitude, your path will become easy to clear prelims. Now, एक और डाउट पूछा गया था मेरे से कि सर ये कब करें हम? When to do this exercise? According to my understanding, that PYQ analysis is a step-by-step process. It's not just a, you have to do before the exam, और आपने उनको रट्टा लगा लिया. It should become your part of your process that will give you a direction, as we discussed earlier, and should be like a religious text to you. कोई बोलेगा और कुछ हुआ है PYQs में, तो आपको PYQs पे रिलाय करना चाहिए. When you see the things, when you see the questions, और आपको समझ में आता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस थीम से पूछे जाते हैं, और ऐसे उनको गलत किया जाता है, और ऐसे कंफ्यूजन एग्जाम में होती है, तो दीज थिंग विल हेल्प. तो जो हमने आज इस सेशन में डिस्कस किया वो ये कि PYQ के जो एनालिसिस है, दैट विल हेल्प यू टू बिकम अ गाइड ऑफ योरसेल्फ. And you have to see the themes, sub-themes, and how the options are being framed
उन चीजों को समझ के आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे को टॉपिक कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर जो डाउट होता है ना कि सर कौन सा सोर्स पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या ये राइट सोर्स है, क्या इसमें से आएगा, that you yourself will be able to answer those questions. So I will start giving you a direction by analyzing those PYQs, but you have to yourself do these exercises, and it's very very important कि हम इसको इग्नोर ना करें. If you are still preparing for mains, it's good. You have to prepare for mains till December. But जब भी full fledged प्री की प्रेपरेशन में आओ, उससे एक महीना पहले start doing this exercise of PYQ analysis and make notes of that. ये माइंड में नहीं करनी है, एक नोट पैड पे पूरे लिखे जाए और एनालिसिस किया जाए. जो अपनी मेंटरशिप सेशन में मैं करवाता हूं, दैट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज, और इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट करता है. दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं ये वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं ये चीज. सो आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल होगा, एंड हम ये एंड करते हैं यहीं पे, एंड विल कम विद अप series of PYQ analysis videos to give you a direction. So that is it for today. Thank you so much, and we'll see you in the coming sessions.